projects projects portfolio management in today's session, and we'll learn together what it is all about. Uh, Before proceeding, I would love to have your introduction. I just need to know whom I'm interacting. Who are my participants? तो आप लोग अगर अपना इंट्रोडक्शन कराना पसंद करें, प्लीज। जी कलीम साहब, मोहम्मद कलीम साहब, आई कैन सी यू। अपना इंट्रोडक्शन कराएंगे आप, where you belongs to, what you are working on, current status। कलीम साहब को आवाज आ रही है मेरी? डॉक्टर हमाद। Yes, Assalamu alaikum. वालेकुम अस्सलाम। Yeah, I'm Dr. Hamad Bata. I'm working as assistant professor in Government College, University, Faisalabad, Liverpool Business School. So my area of research is basically finance. I'm teaching portfolio management to MBA program. So this basically certification is much related to my teaching and research because we try to teach the students how to do their projects in portfolio management. Okay, very nice, Dr. Ahmad. Very nice. Yes. Who else with us? Dr. Rahil is there. Yes, I am Dr. Rahil Mumtaz, assistant professor in Liverpool Business School, GC University, Faisalabad. Who else we have here? Sayyid Anas Gilani. Sayyid Anas Gilani. You know, this introduction is very important because when we introduce with each other, we know that whom we are interacting with, what understanding my participants have, and what level of understanding I have to provide. rapport develop करने के लिए इस इंट्रोडक्शन का होना बहुत जरूरी है, इंट्रोडक्शन का होना बहुत जरूरी होता है। कलीम साहब, अगर आप सुन सकते हैं तो अपना इंट्रोडक्शन करा दीजिए। मोहम्मद कलीम। I think he cannot hear. Okay, let me introduce myself. Atikur Rahman is my name. I'm projects, portfolio, and strategy management practitioner. Having like 25, 26 years of experience in multiple domains. My area of expertise like early part of my career is QHSE, quality, health, safety, environment, and the later part, like 15 years, I've spent in strategy management and project management. Been working abroad for almost 22 years. I was abroad and spending my time with different organizations in Middle East. I've been part of Ministry of Health, Ministry of National Guards, Saudi Arabia, and many other private sector organizations also. Worked as an auditor, as a consultant, as a trainer, in different levels I have worked in my career.
So this is what I am. Multiple business acumen because of an auditor. I've been exposed to almost all industries. So my understanding of industries is quite good. Okay. Any query about my profile? Our agenda for today is understanding strategic portfolio management, and second very important point is sustaining business growth and competitiveness. So I have not put too many points here. We need to understand together what exactly the portfolio management is for, and we need to understand how portfolio management plays role in projects and in organization at the strategic level. Before I move further, मुझे आप लोग अपनी understanding बताइए portfolio management की. I just want to hear from you. मेरे sessions interactive होते हैं. I love to discuss things. I don't like to go for one way communication. So let's make this session more interactive. और डिस्कशन ज्यादा बेहतर है. डॉक्टर सफिया ने ज्वाइन किया है. डॉक्टर सफिया, वेलकम. कैन यू गिव योर इंट्रोडक्शन प्लीज? मैंने अस्सलाम वालेकुम. मैंने पीएचडी किया मेरीन बायोलॉजी में. प्रीवियसली मैं फिशरीज कमिश्नर थी मिनिस्ट्री ऑफ मैरीटाइम अफेयर में, और अब मैंने मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल फूड सिक्योरिटी ज्वाइन की है, और यहाँ एक पीएचडी प्रोजेक्ट को रन कर रही हूँ जो पाकिस्तान में पहली दफा हो रहा है, फिश केज कल्चर टेक्नोलॉजी. Great. Welcome. So who else have joined? Now the people are joining. Good thing. और किसने इंट्रोड्यूस नहीं कराया अपने आप को, वो इंट्रोड्यूस करा दें. फैसल शहजाद. यस फैसल. सर आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे. फैसल, आपको अब आ रही है मेरी आवाज? जी सर अब आ रही है. जी, आप अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए प्लीज. सर मेरा नाम फैसल शहजाद है और मैं वाइजमैन इनोवेशन में एज अ एडमिन एग्जीक्यूटिव काम करता हूँ. ओके, वेरी नाइस. और फिर हमारे पास मोहम्मद आसिफ साहब हैं. ये तो खैर एनपीओ से हैं. Anyways, introduction is important for especially when we talk about the portfolio management. देखिए, सबसे पहली बात, portfolio management is a very specialized subject. So we normally don't have too many audience or too many persons to attend such awareness or such courses. So agenda is what we will try to understand today is strategic portfolio management, what exactly it is, and how it helps in sustaining the business growth and competitiveness. The management of projects has risen to a new prominence as the projects are seen as critical to success in all three sectors, public. देखिए, हम जब पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की बात करते हैं तो उसका जो डायरेक्ट लिंक है वो करंट प्रोजेक्ट्स की बात होती है. जो प्रोजेक्ट्स की इंपॉर्टेंस है आज पब्लिक, प्राइवेट एंड नॉन प्रॉफिट सेक्टर्स के अंदर, इट इज ऑन अ वेरी हाई मार्क. प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, जब हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की बात करते हैं तो इज वन ऑफ द सब्जेक्ट दैट is considered globally one of the hottest subjects. Hottest in the sense that almost throughout the world
Day by day, the project managers are increasing. Project management is in high demand. Now we have millions of PMPs across the world who have done project management professional certification. Organizations are transforming into more structured project-oriented organizations. They are very much focused to get the benefit of project management. So the business scene complexity involved in projects and economic turmoil gives a very little room to take chance of failure in achieving organization's strategic objective. In the current scenario, due to the competition, due to the comparativeness in the market, and due to the very what you call minor margins, we are globally competitive. We have to be globally competitive. Every company have to be globally competitive. You have competitors across the world when you start your business. So the chances of failure जो है वो आपके पास अब रूम नहीं है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कि वो प्रोजेक्ट स्टार्ट करें और वो फेल हो जाए. Failure of one project might be the failure of the whole strategy or for any organization. क्योंकि आप अपना strategic objective achieve नहीं कर पाते once if you get failed in your project. So what PPM projects portfolio management is all about? It is not a technique of project management. Today we are not discussing project management. This is what I want to declare from the very beginning, that today we are not going to discuss project management at all. Although it has a direct link with the project management, but it is above and beyond project management. So the portfolio management is on the top of every organization. It spends all the way from the vision of those in the executive suite to the project management. So it is the reflection. Normally, portfolio management is the reflection of those who are the decision makers, the leadership of the organizations. To the realization of benefits to the enterprise and its successful comparative positioning. So, when you start understanding portfolio management, you have to think above and beyond the project management. Portfolio management is on the top. We will understand what portfolio is all about and what why we are saying that it is above and beyond. Guys, you can understand, please try to make this an interactive session. It's a small session. So discussion hoga, so we will learn from each other. I'm open. I like to have questions during my session. मैं one-way communication पसंद नहीं करता. So I would love अगर आप even in between questions raise करें, so I would love to answer. At any point जो elaborate करना चाहें मुझसे कहेंगे. Yeah, if you like to share your experience, even I'm open for that. Projects portfolio management enables us to not only do projects right, but to select and do the right projects in the first place.
This is the point we need to understand. And this is the key point when we say projects portfolio management. It is not only do projects right, but to select and do the right projects in the first place. It's the selection of the project. हम सिर्फ इस बात की बात नहीं करते projects portfolio management के अंदर कि we have to do the right projects. बल्कि it does not only enables us for this, but enables us to select and do the right projects. There is a difference between doing the project rightly or selecting and doing the right project. Most of the time, organizations face this issue that they have done the project, but it's not adding value to the organization's strategy. हम बहुत कुछ ऐसा करते हैं organizations के अंदर कि वो project तो आपने किया, you have spent millions, but the project is not that much productive. Means that the project is not strategically aligned. So आपको projects portfolio management जो है, it enables you to select the right project in the first place. We believe in selection process. Doing the project rightly, it is a different thing. Yes, it must be there, but the selection process, the filtering, the screening process for the projects is very important, and that's what we normally focus at the projects management, portfolio projects portfolio management. We create the core, the value creation. First of all, we need to understand what is value creation. Value is what we gain out of our projects, programs, and the portfolio for the organization. It's a gain. So the core is that PPM is fundamentally not the management of multiple projects. PPM is the management of the project's portfolio so as to maximize the contribution of projects to the overall welfare and success of the enterprise. So when we talk about projects portfolio management, you just get rid of the myth that it might be the management of multiple projects. We might have a confusion that when we are managing multiple projects and programs, that is portfolio management. No, it is not the project's portfolio management. It is the management of the project's portfolio to maximize the contribution of projects to the overall welfare and success of the enterprise. So the main objective is the success of the enterprise and the welfare of the enterprise. Suppose you are working in an organization and the organization wants to increase their revenues. So whatever the projects and the programs that organization would run would earning revenues, in increasing revenues, and any of the project or the program that would not contribute in increasing revenue would not be adding value to the organization or would not be adding value to that specific strategic objective. So when we say projects portfolio management, our aim is to maximize the contribution of projects and programs to the overall welfare of the organization, overall welfare of the organization, and contribute in the achieving the strategic objective of the organization.
Uh, how does portfolio management differ from project management and program management? Now, before I proceed further, I would love to hear from you, my participants. Can you define in your words what is portfolio, what is project, and what is program? I just need to understand what's your understanding about the portfolio, projects, and program. Yes. Would love to share his knowledge about projects, portfolio, and program. What is your understanding of projects, portfolio, and program? Let's make this session interactive. अच्छा लगेगा जब when we'll be discussing. Yes, Dr. Zafar, please. Your understanding. Yes, sir. I have joined. No, I was at a research farm. So I have joined now. I will share later on discussion. Okay, okay, okay. कोई चाहेगा कुछ वैल्यू ऐड करना यहाँ पर when we say projects portfolio management? So Dr. Hamad, what's your say about the projects, programs, and portfolio? Your understanding about it, because you're also teaching, so we might have a chance to learn something from you, sir, as well. Yes, anyone? Dr. Sophia. So we may say कि strategic approach investment को manage करने के लिए जो है ताकि financial objectives को achieve किया जा सके. Very right, very right. जब हम portfolio management की बात करते हैं तो we are at the strategic level, or objective. You are rightly saying that to achieve the objective, strategic objective, that those objectives can be financial, non-financial, whatever the objectives are, that is the main objective. Okay, anyone else like to add? देखिए जितना आप कंट्रीब्यूट करेंगे, जितने क्वेश्चनिंग करेंगे, इतना you will take with you. These sessions are not study sessions, these are understanding sessions. तो हम जो है इंटरेक्टिव बनाने से सेशन को बहुत ही इफेक्टिव बना लेते हैं. Feel free to say, to ask, to discuss. Okay. So how does portfolio management differ from project management and program management? So what are the management basics of program, portfolio, and projects program basic? Very important thing, need to understand that when we say project and program, we are at the tactical level. Means we are there for doing the things right. Try to understand this point, very important point. If you are going to understand the portfolio management, then you have to understand this point, that projects and programs are at the tactical level, doing things right. Okay. But when we say portfolio, we are at the strategic level. What strategy is there? And our purpose is doing right things. There is a huge difference between doing things right and doing the right things. It's like
कि अगर हम इसको एक एग्जांपल में ले लें कि आप अपने एक है when you are observing someone कि वो काम कैसे कर रहा है, वो काम सही तरीके से कर रहा है या नहीं कर रहा। मैं एक आम अल्फाज में इसको समझाने की, ये टैक्टिकल लेवल होता है कि वो अब काम सही तरीके से एज पर द प्रोसीजर या सिस्टम कर रहा है या नहीं। और दूसरा लेवल होता है कि वो सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा, मतलब वो जो काम कर रहा है वो वाकई इज द राइट वर्क टू डू। ऐसा तो नहीं है कि वो जो काम कर रहा है इट्स नॉट एडिंग एनीथिंग टू द स्ट्रेटेजी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, इट इज useless then. So when we say portfolio is projects, programs, sub portfolio and operations managed as a group to achieve strategic objectives. Whenever we discuss about the portfolio, we always consider strategic objectives, because portfolio all the projects, programs, sub portfolio and operations are the result of these objectives. We launch projects, programs and sub portfolios to achieve strategic objectives. So do we understand this point? Say yes or no. Yes or no. That when we say portfolio is strategic level, doing right things. And when we say project and programs and projects are at the tactical level, doing things right. Yes. What is the reason that all of you are silent, does not like to contribute? Yes. Say yes or no. You understand this or not? Okay. Anas, thank you for your yes in the chat box. That's great. This point needs to, I mean, if you need any elaboration in this point, let me know. I can elaborate it further. But if you understand, then we can proceed to the next slide. So whenever we talk about the portfolio, consider portfolio management at the strategic level, projects and programs at the tactical level. Doing things right means projects and programs, and doing the right things is the portfolio management. Just for better understanding, for those who are maybe new to the subject, when we say project, so what's the difference between projects and operations? We need to understand this one also. Project is always a temporary endeavor. It produces a unique product or output. आप जब project को कहते हैं temporary endeavor, that means it has a definite beginning and definite end. एक certain timeline के लिए project exist करता है, temporary होता है. उस timeline को complete करने के बाद project अपने objective achieve करने के बाद खत्म हो जाता है. और जब हम operations की बात करते हैं तो operations जो हैं ये ongoing होते हैं. Business process of operational management produces the same product repetitively. इसको इस तरह से ले लीजिए कि अभी अगर डॉक्टर सफिया ने अभी अपने बताया कि she's having a project, a very strategic project she's working on. तो ये project जो है when it is in the direction level,
when it is in the designing stage, when it is in development level, it is operations. Once this project is completed, timeline complete हो गई, वो project complete, मतलब तो वो convert हो जाएगा operations के अंदर. जब when it start value adding or it start production. So projects को separately consider करिए हमेशा. It is very important for everyone. And operations, ये segregation बड़ी important है, क्योंकि अक्सर organizations के अंदर ये segregation नहीं होती. They start considering operations as project, जबकि दोनों के objective अलग होते हैं. Operations ongoing होते हैं, projects जो हैं वो temporary होते हैं. कोई मुझे अच्छी example दे सकता है operations and projects की आप लोगों में से? Anyone has good example? Yes. No one has? अस्सलाम वालेकुम सर. वालेकुम सलाम. सर project is like जैसे हम consider करते हैं, it's like a hydropower project के it's under construction, it is considered as a project, but when it is completed and it start producing electricity, that is an operation. So rest of his life it is behaving like an operation. Absolutely right, Anas. Absolutely right. Good to hear from you. Yes, ऐसे ही है बिल्कुल. When you are erecting the plant for hydropower, it is obviously in a project. But once the project is completed and it start production, it will be converted into the operation, because now it is in the routine work. It's ongoing repetitive work. This is how. So this is very important to understand when you are trying to understand the portfolio management. Organizational project management, very important. जब हम प्रोजेक्ट्स की बात करते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की, तो ऑर्गेनाइजेशन वो प्रोजेक्ट्स जो है उनकी जो एग्जिस्टेंस होती है, it is the result of the strategy execution framework. आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जब भी कोई प्रोजेक्ट रन होता है या प्रोग्राम्स रन होते हैं, वो बेसिकली इज द रिजल्ट ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ द स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क. और उसका आउटपुट जो होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के प्रोजेक्ट्स का, उसको जब हम आउटपुट या उसकी जो वैल्यू देखते हैं, उसको हम बेंचमार्क करते हैं, वो स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव से उसको चेक करते हैं क्या इसकी आउटपुट जो हमने सेट की थी वो उस स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव से मैच कर रही है या नहीं कर रही. इसको हम थोड़ा सा एग्जांपल के तौर पे हम डिस्कस करते हैं. लेट्स से गवर्नमेंट ऑफ पंजाब जो है वो डिसाइड करती है कि वो एक नया टर्शरी केयर हॉस्पिटल किसी एरिया के अंदर बनाती है. लेट्स से वो फैसलाबाद में एक नया टर्शरी केयर हॉस्पिटल बनाने जा रही है. अब जब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान डिसाइड करती है तो it is this decision is based on certain strategic objective they have set at the high level. क्या ऑब्जेक्टिव है इस हॉस्पिटल की इरेक्शन का, इस हॉस्पिटल को बनाने का? क्या पॉसिबल है ऑब्जेक्टिव्स? आप भी ऐड कर सकते हैं, कंट्रीब्यूट कर सकते हैं. एक पॉसिबिलिटी ये है कि जो फैसलाबाद की पॉपुलेशन है उनको एक अच्छा टर्शरी केयर हॉस्पिटल यूनिट दिया जाए, और लेट्स से और जो हम पेशेंट्स
पर एनम वहां पर जिनको सर्व करे हॉस्पिटल वो लेट्स से 5 मिलियन पेशेंट्स को सर्व करे, सही है। ऐसा हॉस्पिटल बनाया जाए जो तकरीबन 50 लाख लोगों की जरूरियात को केटर कर सके। कितनी फैसलाबाद में कितनी अभी मतलब पॉपुलेशन कितनी है ऑलमोस्ट, कोई बताएगा फैसलाबाद की पॉपुलेशन का? कितनी पॉपुलेशन है फैसलाबाद की? यस, नहीं मालूम किसी को भी। Guys, most of you are from the Faisalabad, right? It's 5 million. Okay. Sir, thank you. 5 million. तो let's say एक फैसलाबाद को केटर करने के लिए बहुत एक स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव बनाया गया कि इनकी केटर करने के लिए एक हॉस्पिटल, टर्शियरी केयर हॉस्पिटल बनाना चाहिए। अब वो हॉस्पिटल का वो ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए डिसाइडेड टू हैव अ टर्शियरी केयर हॉस्पिटल। अब ये टर्शियरी केयर हॉस्पिटल जो है इज अ ह्यूज प्रोग्राम, क्योंकि उसके अंदर सारे यूनिट्स होंगे, सारी स्पेशलिटीज होंगी। तो वो प्रोग्राम जो है वो कंप्राइजेज ऑफ मैनी प्रोजेक्ट्स, और उन प्रोजेक्ट्स का मतलब वो कंप्लीट होंगे। जैसे जैसे वो प्रोजेक्ट्स कंप्लीट होंगे वो प्रोग्राम के अंदर वैल्यू ऐड करते चले जाएंगे। और जब हम प्रोजेक्ट जब जब पूरा प्रोग्राम कंप्लीट होगा, हॉस्पिटल का प्रोग्राम कंप्लीट होगा, लेट्स से कंप्लीटेड इन 10 इयर्स टाइम, तो हम ये रियलाइज ये एसेस करेंगे कि क्या ये जो हमने स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव सेट किया था टू सर्व द कम्युनिटी ऑफ फैसलाबाद, और क्या ये अचीव हो रहा है या नहीं हो रहा, क्या ये वैल्यू ऐड कर रहा है फैसलाबाद के लेवल पे ये प्रोजेक्ट, ये प्रोग्राम, हॉस्पिटल का प्रोग्राम, या नहीं कर पा रहा। So our objectives, what we do through the organizational project management is to cater or is to support or is to contribute in the strategic objective. तो ये बड़ा important point है कि जो भी project आप करते हैं, it is the result, it is the reflection of your strategic framework. ऑर्गेनाइजेशन में 4 enablers होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन enablers के ऊपर, आप enablers को समझिए कि these are the pillars of organization। एक जो मेजर enabler होता है वो होता है स्ट्रक्चरल enabler होता है। जब हम स्ट्रक्चरल enabler की बात करते हैं तो basically that is the hierarchy of the organization, a complete structure, how the organization work, then the culture of the organization, cultural enabler होता है कि आप उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उस ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर क्या है, how they achieve things, how do they execute, और किस अंदाज से उनका वर्किंग स्टाइल क्या है। थर्ड इनेबलर इज ऑलवेज अ टेक्नोलॉजिकल, आप कौन सी टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, आप हाईटेक टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, आप अप टू डेट हैं या नहीं है। जब ये इनेबलर्स मौजूद हों तो वेरी इंपॉर्टेंट इनेबलर इज द ह्यूमन रिसोर्स, कि आपके पास किस लेवल की ह्यूमन रिसोर्स अवेलेबल है, कितनी कंपैरेटिव है, कितनी उस ह्यूमन रिसोर्स के अंदर नॉलेज
knowledge है, understanding है उसकी, capable है to handle the projects and programs. तो आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को अगर वो सक्सेसफुली कोई प्रोग्राम या प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करना चाहती है, तो वो इट इज द रिजल्ट ऑफ दीज 4 enablers. अगर ये enablers स्ट्रेंथन होंगे, फॉर एग्जांपल अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन, किसी ऑर्गेनाइजेशन के पास बहुत ही अच्छी मैन पावर हो, बड़े कंपैरेटिव लोग हो, मगर उनकी टेक्नोलॉजी ऑब्सोलीट हो, जबकि ह्यूमन रिसोर्स उनकी एक्सेलेंट है, कल्चर भी अच्छा हो, तो क्या आप समझते हैं कि वो कोई प्रोजेक्ट बहुत अच्छी तरीके से एग्जीक्यूट कर सकेंगे? नहीं। या वाइस वर्सा, या उनके पास सब कुछ हो, स्ट्रक्चर भी अच्छा हो, कल्चर भी अच्छा हो, टेक्नोलॉजी भी बेहतरीन हो, मगर ह्यूमन रिसोर्स उनकी कंपैरेटिव ना हो, obsolete हो, their understanding of the subject would not be there. So do you think that they are able to execute the projects very well? No. So if you want to run the projects or successful achieve करने चाहते हैं आप successfully अपने strategic objectives को, then you need to strengthen all your enablers. Means you have to be structurally viable. You need to have a very good working culture. You need to update your technology, and you need to have very competitive and skilled workforce. Let's discuss from this example the role of program projects in the portfolio. इस एग्जाम्पल के अंदर, इस फिगर के अंदर आप देख सकते हैं कि it is for an organization for the whole year, first quarter, second, third and fourth quarter. इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उनका जो पोर्टफोलियो है, portfolio is always comprised of programs, projects and operations. उनका जो पोर्टफोलियो है उसके अंदर एक मेजर प्रोग्राम है, this is the program they have, and the program is refresh infrastructure. Or under the same program we have different projects. One project is not under the program, separate projects we have other than the program. We have moved finance to 8th floor, one of the project. Other project is version upgrade of the core system. So this is the portfolio of the organization. अब portfolio में program किस तरह work करते हैं, projects कितना? अच्छा देखिए, program के अंदर जो projects होते हैं वो interrelated projects होते हैं. तो आप देख सकते हैं इस program के अंदर project 1 जो है प्रोजेक्ट 1 जो है इस प्रोग्राम के अंदर जो प्रोजेक्ट 1 है ये रहा, ये जो है रिप्लेस द नेटवर्क है. इसका दूसरा प्रोजेक्ट जो है वर्चुअलाइज सर्वर्स है, और थर्ड प्रोजेक्ट जो है अपग्रेड रिमोट डेस्कटॉप है. ये सब रिलेटेड प्रोजेक्ट्स हैं. मींस जो भी प्रोग्राम, जब हम प्रोग्राम मैनेजमेंट की बात करते हैं तो प्रोग्राम मैनेजमेंट के अंदर जो प्रोजेक्ट्स हम रन करते हैं वो उनका रिलेटेड एक दूसरे पे डिपेंडेंट होना लाजमी है. मींस जो भी प्रोजेक्ट हम करेंगे ये कंट्रीब्यूट करेगा प्रोग्राम के अंदर, और प्रोग्राम इज रिफ्रेशिंग इंफ्रास्ट्रक्चर.
जब ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा, इट विल कंट्रीब्यूट टू द प्रोजेक्ट। ये वर्चुअल सर्वर्स जब कंप्लीट होगा, इट विल कंट्रीब्यूट टू द प्रोजेक्ट। जब हम अपग्रेडिंग रिमोट डेस्कटॉप्स, इट विल आल्सो कंट्रीब्यूट टू द प्रोजेक्ट। सो हम बेसिकली वैल्यू रियलाइजेशन की बात करते हैं, बेनिफिट रियलाइजेशन की बात करते हैं एट द प्रोग्राम लेवल। कोई पॉइंट कोई डिस्कस करना चाह रहे? कुछ आवाज आ रही है मुझे। सो प्रोग्राम के अंदर जितने भी प्रोजेक्ट्स होते हैं, ऑल प्रोजेक्ट्स आर इंटर रिलेटेड। आप इस प्रोग्राम को देखिए कि इसके जो फर्स्ट प्रोजेक्ट है वो फर्स्ट क्वार्टर के अंदर शुरू हो रहा है, एंड इट्स गोइंग टू कंप्लीट इन द थर्ड क्वार्टर। उसका सेकंड प्रोजेक्ट सेकंड क्वार्टर में शुरू हो रहा है, इट्स गोइंग टू फिनिश इन द फोर्थ क्वार्टर, एंड थर्ड प्रोजेक्ट जो है वो थर्ड क्वार्टर में शुरू होकर नेक्स्ट ईयर तक चलेगा। So this is how they have allocated time based on their available resources. और फिर आप उसको एक सेपरेट इसी पोर्टफोलियो के अंदर सेपरेट प्रोजेक्ट है जो मूव फाइनेंस डिपार्टमेंट टू द 8th फ्लोर। तो ये प्रोजेक्ट जो है ये फर्स्ट क्वार्टर में शुरू हो रहा है और इट्स गोइंग टू एंड इन द थर्ड क्वार्टर। सिमिलरली early first quarter say version upgrade of core system which will last up to third quarter. So this is how in organizational portfolio different projects and programs are executed. कोई question आप लोगों से? कोई आप लोगों को confusion हो please? कोई क्वेश्चन है तो बताइए प्लीज। कोई कंफ्यूजन इस लेवल पे? जफर, एक क्वेश्चन रेलेवेंट है। एक्सक्यूज मी, आई एम स्पीकिंग डॉक्टर जफर। या सर आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आवाज आ रही है, बिल्कुल आ रही है। ये प्रोजेक्ट पंजाब एग्रीकल्चर रिसर्च बोर्ड का कोई प्रोजेक्ट आए या इस तरह उसमें जो फाइनेंस होता है वो फाइनेंस कोई आपका सीनियर डायरेक्टर जनरल या एडिशनल सेक्रेटरी वो हमसे ले सकते हैं या वापस ही प्रोजेक्ट में जाना पार में जाएगा? मुझे थोड़ा सा क्वेश्चन या चाहिए, मैं क्वेश्चन नहीं क्वेश्चन समझ ये है कि पार प्रोजेक्ट मेरे पास आया है, वो ऑन गोइंग है और उसमें से कुछ फंड्स हायर अथॉरिटी मांगती है, लेना चाहती है कि ट्रांसफर कर दें हमें फंड्स। मैं डायरेक्टर हूँ, डायरेक्टर जनरल कहते हैं कि फंड्स मुझे 7 मिलियन 5 मिलियन का फंड दे दें, तो वो ऐसा किया जा सकता है? अच्छा देखिए, ये तो ऑर्गेनाइजेशन की नॉर्म्स हैं। ये तो ऑर्गेनाइजेशन, आपकी ऑर्गेनाइजेशन आपको अलाउ करती है कि आप विद इन ऑर्गेनाइजेशन फंड ट्रांसफर कर सकते हैं या नहीं कर सकते। देखिए ना, दे कैन नॉट डू थिंग्स that are not allowed. Can you hold for a while? Just 1 minute, please. ये तो ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि उनका कल्चर क्या है। ये तो कल्चर के ऊपर है। मैंने आपने एक चीज देखी, मैंने इससे पहले जो स्लाइड थी ये मैंने अभी आपके सामने जस्ट गॉन बैक। इसके अंदर हमने जो इनेबलर्स है ना, उसके अंदर बहुत बड़ा इनेबलर है वो कल्चर है।
तो आपका स्ट्रक्चर और कल्चर क्या कहता है, ये एक अलग इम्पोर्टेंट चीज है। तो अगर आपके फंड्स चले जाएंगे तो आपका प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगा, आपका प्रोजेक्ट रुक जाएगा या स्लो हो जाएगा। तो ये अगेन ये भी एक स्ट्रेटेजिक डिसीजन है कि वो फंड्स अगर वापस ले रहे हैं तो ये पॉसिबल तो है, बिल्कुल पॉसिबल। और कोई क्वेश्चन? थैंक यू सर। और किसी का कोई क्वेश्चन है कोई? ओके। So all three are aligned and driven by the organization strategy. However, each one contributes differently to the achievement of a strategic objective. देखिए, चाहे वो प्रोजेक्ट्स हो, प्रोग्राम्स हो या पोर्टफोलियो, इन सब का एग्जिस्टेंस, इन सब का मौजूदगी जो है वो है टू अचीव द स्ट्रेटेजिक गोल्स। और तीनों जो है कंट्रीब्यूट करते हैं इन अचीविंग योर स्ट्रेटेजिक गोल्स। सो हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की जब बात करते हैं वो बड़ा स्पेसिफिक means we develop and implement plans to achieve a specific scope। जबकि प्रोग्राम की जब हम बात करते हैं, it harmonizes its projects and programs and managing their interdependencies। मगर जब हम बात करते हैं पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की, तो पोर्टफोलियो इज अलाइंड बाय सेलेक्टिंग द राइट प्रोग्राम्स, प्रोजेक्ट्स and prioritizing the work and providing the needed resources। So portfolio का जो purpose है entirely different है। जैसे हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि वो प्रोग्राम्स एंड प्रोजेक्ट टेक्निकल लेवल पे होते हैं और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट स्ट्रेटेजिक लेवल पर। What is the objective we get, or what is the relationship when what we create in the program and what we create in the project? बड़ा important slide है for better understanding। प्रोजेक्ट्स के अंदर हम डिलीवरेबल्स, क्वालिटी ऑफ डिलीवरेबल्स केटर करते हैं। हमारा आउटपुट जो है वो डिलीवरेबल हो, क्योंकि प्रोजेक्ट इज टू रियलाइज स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव और गोल। प्रोजेक्ट के अंदर हम प्रोडक्ट और सर्विस डिलीवर करते हैं। हमारा ऑब्जेक्टिव जो होता है वो डिलीवरी ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस। हमारे पास एक स्पेसिफिक स्कोप होता है, हमें एक बजट दिया जाता है कॉस्ट की सूरत में, और हमारा एक टाइमलाइन होती है, स्केड्यूल होता है जिसको हम एग्जीक्यूट करते हैं, और हम एक डिलीवरेबल बनाते हैं या प्रोड्यूस करते हैं। और प्रोजेक्ट का आउटकम जो होता है वो क्वालिटी डिलीवरेबल्स। प्रोग्राम का आउटकम जो होता है वो स्टेक होल्डर वैल्यू होता है, क्योंकि प्रोग्राम जो है वो कंप्राइज कर रहा होता है कई प्रोजेक्ट्स के ऊपर। तो उसका हर प्रोजेक्ट जो है कंट्रीब्यूट करता है स्टेक होल्डर को वैल्यू डिलीवरी के। तो its focus is more on stakeholder value delivery। Portfolio management is a bit different. It is the top level and it drives business value. Business value is directly linked with the strategic objective that you have set. तो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के अंदर हम बिजनेस गोल अलाइनमेंट की बात करते हैं, हम बिजनेस वैल्यू अलाइनमेंट की बात करते हैं, हम प्रोग्राम्स एंड पोर्टफोलियो सिलेक्शन की बात। और इट इज लेड बाय द बिजनेस, मींस इट इज ऑन द टॉप लेवल, main executives of the organization
they run these programs, the portfolio. So portfolio is to realize strategic goals and objectives. This is the main purpose of the portfolio management. Guys, any point you want me to elaborate here? No? मुझे बड़ी confusion हो रही है क्योंकि I run very interactive sessions where there are a lot of discussions are there and people like to discuss things. But today's session is very silent. No one wants to say something or add value here. देखिए हम सब लोग experienced लोग हैं. कुछ तो हमसे में बहुत ही ज़्यादा experience और qualified लोग. When we start interaction, when we start discussing, it value adds to everyone. Projects गवर्नेंस मॉडल मुख्तलिफ गवर्नेंस मॉडल्स हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर जिसको हम बेसिकली प्रोजेक्ट गवर्नेंस मॉडल अगर कंसिडर करते हैं उसके अंदर द लोएस्ट मॉडल इज अ प्रोजेक्ट सपोर्ट ऑफिस. प्रोजेक्ट ऑफ सपोर्ट ऑफिस है. फिर पीएमओ की बात आती है. इट गोज समथिंग लाइक दिस. प्रोजेक्ट सपोर्ट ऑफिस, पीएमओ, फिर प्रोग्राम मैनेजमेंट ऑफिस, पीजीएमओ, फिर पोर्टफोलियो प्रोजेक्ट्स पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, और ऑन द टॉप इज एंटरप्राइज project management office. These are different models that we follow in portfolio management or projects portfolio management. किस तरीके से these models work? It is from bottom to up. You can see this arrow here. What this arrow is indicating: reporting and escalation. So जितनी रिपोर्टिंग जो आप प्रोजेक्ट सपोर्ट ऑफिस है, फिर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऑफिस है, बेसिकली ये ग्राउंड लेवल पे होते हैं. तो जो भी रिपोर्टिंग है, एस्केलेशंस हैं, इट गोज अप. पीएस जो प्रोजेक्ट और सपोर्ट ऑफिस है वो पीएमओ को रिपोर्ट करता है. पीएमओ रिपोर्ट करता है पीजीएमओ प्रोग्राम मैनेजमेंट ऑफिस को, और फिर उसके बाद बीजीएमओ जो है प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो मैनेजमेंट ऑफिस को रिपोर्ट करता है, और पीपीएमओ जो है ईपीएमओ इंटरप्राइज प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऑफिस को रिपोर्ट करता है. मगर स्ट्रेटजी जो है और स्टैंडर्ड जो है इट फ्लोज डाउनवर्ड्स. इट गोज डाउनवर्ड्स. आप ये देख सकते हैं कि जो ऊपर से एंटरप्राइज मैनेजमेंट ऑफिस से आपकी स्ट्रेटजी गोज टू द पोर्टफोलियो ऑफिस, देन इट गोज टू डाउनवर्ड टुवर्ड्स द प्रोग्राम, और इम्प्लीमेंटेशन के लिए प्रोजेक्ट लेवल पे स्ट्रेटजी और स्टैंडर्ड्स आते हैं. ये गवर्नेंस टिपिकल गवर्नेंस मॉडल है किसी भी. Okay, Dr. Fayaz, no problem. But at least you are interacting through chat box. I've received a message from Mohammed Fayaz here. That's very good. So this is how the governance model work in projects portfolio management. Any query at this point? If it is not clear, you want me to elaborate?
हमने बहुत कुछ डिस्कस किया पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के बारे में, क्या रीजन है हमने अभी तक. Now we need to understand what exactly is the portfolio management. When we say what is portfolio management and why does it matter? Portfolio management is a combination of various management disciplines. Portfolio management comprises of business management, journal management, and project and program management. आवाज नहीं आ रही मुझे. आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? गरीब साहब कुछ बोलना चाह रहे हैं आप? So portfolio management is a combination of business management, journal management, and project and program management. Portfolio management drives strategic execution and maximize organizational value. This is very important because portfolio management जो है वो आपकी स्ट्रेटजी को ड्राइव करता है और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की जो वैल्यू है, जो बिजनेस वैल्यू है, उसको एनहांस करता है. So the purpose of portfolio management is execute strategy. हम portfolio management के through strategy execute करते हैं. हम maximize करते हैं organizational value. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन जो बिजनेस वैल्यू है उसको मैक्सिमाइज कैसे कर सकते हैं. इट एनहांस डिसीजन मेकिंग. आपका पोर्टफोलियो मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस जो है आपकी डिसीजन मेकिंग प्रैक्टिसेस को एनहांस कर देती है. एंड मैनेज ऑर्गेनाइजेशनल चेंज. और थ्रू पोर्टफोलियो मैनेजमेंट जो ऑर्गेनाइजेशनल चेंजेस आ रहे होते हैं उनको भी मैनेज कर. These are the 4 purposes of the portfolio management. Portfolio management के components हम discuss करने जा रहे हैं. Basically 4 components हैं, main components of the portfolio management. First component is select the right projects. Selected projects must align with the business strategy and meet other important criteria. So selection of the right project is first component. Then optimize the portfolio is our second component. Then protect the portfolio value is our third component. Then mature the portfolio processes is our fourth component. तो हम जब ऑप्टिमाइजेशन की बात करते हैं, when we optimize portfolio, all steps necessary to construct an optimal portfolio given current limitations and constraints. जब हम प्रोडक्ट पोर्टफोलियोज वैल्यू की बात करते हैं, तो the project benefits must be protected in order to deliver maximum value. और जब हम मेच्योरिटी की बात करते हैं, मेच्योरिटी ऑफ द प्रोजेक्ट्स पोर्टफोलियो प्रोसेसेस, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हायर पोर्टफोलियो मेच्योरिटी ट्रांसलेट्स इनटू द ग्रेटर रियलाइजेशन ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ द प्रोजेक्ट. तो जितना आपका पोर्टफोलियो मेच्योर होगा उतना आपकी जो रियलाइजेशन है, बेनिफिट रियलाइजेशन मैक्सिमाइज होगा. So higher portfolio maturity translates into a greater realization of benefits of projects portfolio management. Ultimately, goal हमारा maximize value to the organization. हमारा purpose
पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के अंदर is the maximization of the value of the organization. Any confusion in this figure? Feel free to ask, please. What about taking 5 minutes break? What do you think? So stretch yourself for the next Sure. hour. This is normally I practice in my online sessions. I give 5 minutes break after every few minutes. I mean, after 1 hour, so the people can stretch themselves. Okay, sir. It's fine. Okay. So let's take 5 minutes break and then we will come back. Okay. बंद हो गया।
Welcome back. Welcome back. We'll be discussing now portfolio components, main components of the portfolio. Are the collection of programs, projects, and operations managed as a group to achieve strategic objectives, may not necessarily be interdependent or have related objectives, are quantifiable, that is, they can be measured, ranked, and prioritized. जब हम पोर्टफोलियो कंपोनेंट्स की बात करते हैं तो पोर्टफोलियो कंपोनेंट्स के अंदर जो हैं वो बेसिकली आपके प्रोग्राम्स, प्रोजेक्ट्स एंड पोर्टफोलियोज, द ऑब्जेक्ट ऑपरेशंस आते हैं, पोर्टफोलियो कंपोनेंट्स का हिस्सा होते हैं। और जब हम पोर्टफोलियो कंपोनेंट्स के अंदर देखते हैं तो हम बेसिकली हमारे पास कॉन्सेप्ट पाइपलाइन कॉन्सेप्ट है कि हमारे पास जो यार्ड स्टिक है, जो हम सिलेक्शन प्रोसेस के अंदर हम यूज करते हैं प्रोजेक्ट्स, प्रोग्राम्स एंड ऑपरेशंस के अंदर, हम वो उन सिलेक्शन, उन प्रोजेक्ट्स, उन प्रोग्राम्स और उन ऑपरेशंस को सेलेक्ट करते हैं और या प्रायोरिटी पर रखते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव अचीव करने में सपोर्ट कर रहे हैं। So this is what we normally do. हम एक पाइपलाइन क्रिएट करते हैं। पाइपलाइन का कॉन्सेप्ट ये होता है कि व्हेन एनी ऑर्गेनाइजेशन, आपकी ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एट अ टाइम काफी प्रोजेक्ट्स प्रपोज होते हैं, या वो प्रोजेक्ट्स जो हैं वो आप विन कर सकते हैं, या इंटरनल प्रोजेक्ट्स भी हो सकते हैं, एक्सटर्नल प्रोजेक्ट्स भी हो सकते हैं, ये प्रोग्राम्स हो सकते हैं। तो इन प्रोजेक्ट्स की इंस्टेड के हम सारे प्रोजेक्ट्स करें, ये पॉसिबल नहीं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कि जो प्रपोज प्रोजेक्ट्स हैं उन सबको एग्जीक्यूट कर सकें। तो एट अ टाइम एग्जीक्यूशन पॉसिबल नहीं होती किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो फॉर दैट पर्पस what normally happens is we set priorities. आप मेरे बैकग्राउंड के अंदर वर्ड प्रायोरिटीज देख भी सकते हैं, and which I consciously put when I started this session, because this in the portfolio management, our main role as a portfolio manager is to set priorities. Priorities क्या हैं कि वो प्रायोरिटीज हम किस चीज के ऊपर सेट करते हैं, व्हाट आर द सोर्सेज, व्हाट मेक्स अस टू प्रायोरिटाइज एनी प्रोग्राम्स और प्रोजेक्ट। प्रायोरिटीज हम सेट करते हैं ये देखने पे कि कौन सा प्रोग्राम्स, कौन सा पोर्टफोलियो का कंपोनेंट जो है वो वैल्यू ऐड करता है इन अचीविंग स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव। तो बेस जो प्रोग्राम्स, प्रोजेक्ट्स हमारे पास उस व्हाट यू कॉल क्राइटेरिया को मैच करते हैं, उन प्रोजेक्ट्स और उन प्रोग्राम्स को हम उनकी रैंकिंग करते हैं और उनको प्रायोरिटी सेट करते हैं और अपने अवेलेबल बजट के मुताबिक। तो ये बड़ा एक स्ट्रैटेजिक काम है, गवर्नमेंट के लेवल पे भी होता है, ऑर्गेनाइजेशंस लेवल पे भी होता है। गवर्नमेंट जो है अपनी प्रायोरिटीज बेस्ड ऑन द स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव और जो उन्होंने सेट की होती है उसके मुताबिक वो प्रोजेक्ट प्रायोरिटीज या प्रोग्राम्स प्रायोरिटीज सेट करती हैं। आप देखिए कि कुछ गवर्नमेंट जो है बड़े कॉस्मेटिक प्रोजेक्ट्स करती हैं, कुछ गवर्नमेंट जो हैं वो बड़े डिटेल इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसे प्रोजेक्ट्स करती हैं जो लॉन्ग टर्म अचीवमेंट्स के होते हैं।
बल्कि जो बेस्ट कॉम्बिनेशन होता है वो दोनों टाइप के, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए जो गवर्नमेंट अपना पोर्टफोलियो सेट करती हैं, which is more beneficial for at the country level. कोई कंट्रीब्यूट करना चाहेगा, कोई इस पॉइंट को एलैबोरेट करना चाहेगा कुछ अपने पार्ट पे? पोर्टफोलियो मैनेजमेंट डोमेन्स, हमारे 5 डोमेन्स हैं पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के। नॉलेज जो नॉलेज एरियाज हैं हमारे, जब हम पोर्टफोलियो मैनेजमेंट एज अ सब्जेक्ट पढ़ते हैं और हमारा व्हेन वी लाइक टू कॉम्प्रिहेंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, दीज आर 5 डोमेन्स। सबसे पहला डोमेन जो है इट इज स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट डोमेन है। सेकंड इज द गवर्नेंस डोमेन। थर्ड इज द पोर्टफोलियो परफॉर्मेंस डोमेन, रिस्क मैनेजमेंट डोमेन एंड कम्युनिकेशन मैनेजमेंट डोमेन. These are 5 domains in the project portfolio management. इन्हीं डोमेन्स के गेट आपकी पूरी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट घूमती है. We achieve our objective through understanding these domains. फिर हमारे पास 3 process groups हैं पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के अंदर, जिसको हम डिफाइनिंग, अलाइनिंग, ऑथराइजिंग एंड कंट्रोलिंग, ये 3 process groups हैं. अच्छा, बिफोर डिस्कसिंग दिस, देखें जो प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का सब्जेक्ट आज हम डिस्कस कर रहे हैं, इसका जो रेफरेंस गाइड है वो प्रोजेक्ट्स पोर्टफोलियो मैनेजमेंट स्टैंडर्ड बाय PMI है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट USA. We follow their guide or their standard for projects portfolio management. Projects portfolio management जो है वो as a standard भी implement होती है और as a certification भी हम करते हैं. I'm a certified portfolio manager, PFMP. Pakistan के अंदर when I did my PFMP, I was the second or third portfolio management professional. अभी भी पाकिस्तान में ज़्यादा बड़ी तादाद नहीं है portfolio management professionals की. As per my understanding, hardly मेरे ख्याल से 8 या 10 लोग हैं पूरे पाकिस्तान के अंदर जो PFMP certified. One I'm among them. तो हम जो भी डिस्कशन इसके बाद, इससे पहले जो स्लाइड्स थी जो हमने डिस्कशन किया, it was bit journal discussion. Now onwards we will be discussing from the reference of the standard, the portfolio management standard that we follow, और उसको हम थोड़ा सा elaborate करेंगे ताकि आप लोग पोर्टफोलियो मैनेजमेंट स्टैंडर्ड को भी समझ सकें कि उसका जो नॉलेज है वो कहाँ से मिल रही है और किस तरीके से वर्क करता है. तो जैसे मैंने कहा 5 डोमेन्स और नॉलेज एरियाज की बात करता है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट स्टैंडर्ड, दैट इज स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट, गवर्नेंस, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट एंड कम्युनिकेशन मैनेजमेंट. प्रोसेस ग्रुप्स की बात करता है, 3 प्रोसेस ग्रुप्स हैं, डिफाइनिंग, अलाइनिंग, ऑथराइजिंग एंड कंट्रोलिंग. और दिस इज द होल पोर्टफोलियो मैनेजमेंट. अगर आप आसान तरीके से अपनी बहुत ही इजीएस्ट वे में पोर्टफोलियो मैनेजमेंट को समझना चाहते हैं तो इट इज कंप्राइजिंग ऑफ 16 प्रोसेसेस. टोटल 16 प्रोसेसेस के ऊपर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट बेस करती है. तो हमारे पास 5 नॉलेज एरियाज हैं जो मैंने अभी प्रीवियस स्लाइड में आपसे डिस्कस किए थे. Strategic management, governance management, performance management, portfolio communication management and risk management. ये 5 knowledge areas हैं हमारे पास.
और 3 हमारे प्रोसेस ग्रुप्स हैं जिसके अंदर डिफाइनिंग, अलाइनिंग, फिर ऑथराइजिंग एंड कंट्रोल, ये प्रोसेस ग्रुप्स हैं। हर प्रोसेस ग्रुप के अंदर these are like develop portfolio strategic plan is one of the process, develop portfolio charter, develop portfolio roadmap. These are the processes under strategic management. So when you are trying to understand portfolio management, आपको दोनों aspects से उसको समझना है कि किस तरीके से strategically portfolio management drives and how we define it. What are the things that we define in the portfolio? Then from the governance aspect, we define basically development portfolio management plan and define portfolio. From the performance, we develop portfolio performance management plan. Communication, we develop communication management plan. Then portfolio risk management plan. We develop portfolio risk management plan. When we say aligning process group, we have managed strategic changes in the portfolio, optimize portfolio, manage supply and demand, manage portfolio value, manage portfolio information, manage portfolio risk. Authorizing, when the portfolio is ready, then you need to authorize your portfolio. So authorize portfolio and provide portfolio oversight. So these are 16 knowledge areas that needs to be comprehended, that needs to be understood by each of you in detail if you want to understand the portfolio management. जैसे मैंने आपसे कहा कि we portfolio management standard is there, that I'm a practitioner of the portfolio management. Portfolio management professional is a certification from PMI. Or how you can become PFMP certified. Let me elaborate this. मैं PFMP की थोड़ी सी हिस्ट्री आपको बयान कर देता हूँ, आप लोग समझ लेंगे. PFMP recognizes advanced experience, skills, and performance necessary to manage and align a portfolio management portfolio projects and programs to realize organizational strategy and objective. देखिए आप when you are certified, certification क्यों important होती है? That if you have knowledge, then you need to be endorsed. आपकी knowledge किसी तरह recognize होनी चाहिए. तो आप जब आप portfolio management certification, it's an international certification. आप जब करते हैं तो basically you get the recognition of your knowledge about the portfolio management. So portfolio management law was launched in 2013, and first time the first certificate was awarded in 2014. By year 2023, ये थोड़ी सी एक साल पुरानी स्टैटिस्टिक्स हैं, पूरी दुनिया में सिर्फ 1459 PFMP होल्डर्स मौजूद थे. अब यकीनन ये नंबर बढ़ के मुमकिन है 2000 तक पहुंच गया हो या उससे कम, मगर we have very few PFMPs across the world. उसकी रियलाइजेशन आपको भी हो गई होगी कि ये सब्जेक्ट इज a strategic level subject. Understanding this subject, you need to be among the decision makers. It is how to manage the portfolio. So it is something very we discuss at the strategic level. So your vision, your exposure must be there.
Uh, how does the PMP credentials differ from project management? Not going to discuss this, right? It's useless. आप अगर पोर्टफोलियो पीएफएमपी करना चाहते हैं तो उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पीएमआई का है कि आपने अगर सेकेंडरी डिप्लोमा होल्डर हैं तो यू नीड 84 months of experience. अगर आपके पास बैचलर्स डिग्री है you need to have 48 months. और अगर ग्रेजुएट डिग्री है you need to have 36 months minimum experience to qualify. To qualify for the PFMP. So just as a value addition, I have added this for those who might be interested in PFMP certification, who wants to pursue their career in portfolio management. It is one of the most elite and highly respected certification around the world. बहुत एक्सक्लूसिव बैच है PFMP का. Not everyone can qualify for this PFMP certification. जो एग्जाम आता है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का जो आपको देना होता है टू गेट सर्टिफाइड, उसका जो एग्जाम किन किन एरियाज से आता है, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, गवर्नेंस, और उसकी जो परसेंटेज ऑफ एग्जाम क्वेश्चंस है वो मेंशन है आपके पास सामने. तो आई जस्ट wanted to introduce portfolio management certification for more enhanced knowledge about the portfolio management. Or any of you, if you are interested in getting certification or you want to be certified, I can support you in this regard. Now, बड़ा important topic हम इस section के अंदर discuss करेंगे after discussing the portfolio management professional, the strategic project portfolio management. जब हम बात करते हैं strategic portfolio management की, तो ये basically it is the portfolio management, the same what we were discussing, but ये किस तरीके से मुख्तलिफ हो जाता है. It is a centralized management of processes, methods and technologies used by project managers and project management office to analyze and collectively manage a group of current proposed projects based on a number of key characteristics. तो हम जब हम strategic project portfolio management की बात करते हैं तो basically it is the centralized management of processes and methods and technologies used by project manager and project management office. और ये strategic portfolio, it is important because at the strategic level you allocate your funds towards the programs and projects. तो आप अगर इसकी centralized management हो रही है तो आपकी allocation बड़ी controlled होती है, allocation of funds and resources. हम डिस्कस करना चाह रहे हैं कि रोल ऑफ इनोवेशन इन स्ट्रेटेजिक पोर्टफोलियो एंड प्रोजेक्ट्स एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट. इनोवेशन क्या चीज है? इनोवेशन, कैन एनीवन एक्सप्लेन मी व्हाट इज इनोवेशन? हम जब इनोवेशन की बात करते हैं तो इनोवेशन क्या है? यस, anyone would like to say something about the innovation? Yes.
What is innovation? कोई बोलना चाहेगा इनोवेशन के बारे में कुछ? इनोवेशन जो है, इट हैज डायरेक्ट लिंक विद आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग। मीन्स एक आप टिपिकल पैटर्न से काम करते हैं और आप यू डिसाइड्स कि मैं उस पैटर्न को चेंज कर लेता हूँ, उस प्रोसेस को चेंज कर लेता हूँ, उसके अंदर कोई इनोवेट करता हूँ, कोई टेक्निकल या प्रोसेस एडवांसमेंट लेकर आता हूँ उस प्रोसेस, या आई माइट डिसाइड दैट एक कोई नई टेक्नोलॉजी मैं उसके अंदर एड अप करता हूँ। You really said that, Mohammed Fayaz, the new creative method of doing things. New creative method of doing things, innovative approach कह सकते हैं, बिल्कुल इसको भी कह सकते हैं आप। और आपकी how you innovate, how आप एक काम करते आ रहे हैं, एक प्रोसेस फॉलो करते जा रहे हैं, करते आ रहे हैं और उससे प्रोडक्टिविटी भी लेते आ रहे हैं, मगर टुमारो यू डिसाइड कि हमें अप टू डेट होना है, हमें जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है उसको इंकॉर्पोरेट करना है अपने प्रोसेस के अंदर। So when you start incorporating the technological advances in your processes, basically what you are trying to do, you are trying to innovate your process. तो जब भी हम पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के अंदर इनोवेशन की बात करेंगे तो इनोवेशन ड्राइव्स ग्रोथ, adapts to market change and maintains competitive advantage. तो ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से whenever we say innovation adopt, तो basically आप you drives growth और market change और एक बिल्कुल you would have a comparative advantage on others. What is our role is encourage the culture of innovation by allocating resources to exploratory projects with high potential returns, by supporting entrepreneurship and cross-functional collaboration. ये strategic decisions हैं, ये high level पे organizations की leadership को लेने पड़ते हैं, लेने चाहिए। Utilizing innovation frameworks like design thinking or lean startup to systematically explore new ideas. So आप basically innovation जो है वो leadership से आती है। With my personal experience, अगर top management, the leadership of the organization have the innovative approach, then people would like to do the things differently with a new update dynamics, considering the update dynamics of the business. और ये बड़ी important है growth के लिए किसी भी organization की, and to adopt the market change and maintain competitive advantage. Risk management for strategic portfolio management is another important area. Implementing risk mitigation strategies such as risk avoidance, transfer, acceptance, or reduction. We do the risk management, which is very important in the whole process.
We identify risk, potential risk through SWOT or pastel analysis and brainstorming sessions. We evaluate risk based on their probability and impact using risk matrices and heat images. So risk management is another very important area that we focus on in portfolio management. When we do risk management, basically we are proactive. We want to see what might happen in the future that can cause harm to my overall portfolio. It can cause harm in adding value to the organization. तो ये एक बहुत ही important area है strategic portfolio management. Before launching your portfolio, you are supposed to do the proper risk management of your domain. हम किस तरीके से बैलेंस कर सकते हैं इनोवेशन और रिस्क को? ये एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि अगर हम बहुत ज्यादा इनोवेटिव हो जाएंगे तो देयर इज अ चांस कि हम बेसिकली रिस्क बढ़ा रहे हैं, क्योंकि आप इनोवेशन जो है वो आपको जब भी कोई आप नया काम करने जाते हैं तो एक हाई रिस्क होता है. सपोज आप अभी आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एक तरह के प्रोजेक्ट्स करती है. एक फॉर एग्जांपल एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है जो एक्सपर्टीज है उनके पास, जो एरिया जिसको वो एक्सप्लोर करते हैं और जिसमें वो महारत रखते हैं, वो मुमकिन है कि ब्रिज कंस्ट्रक्शन हो. और अरसे दराज से लेट्स से 20-25 ईयर्स से वो कंस्ट्रक्शन कंपनी ब्रिजेस कंस्ट्रक्ट करते हैं. Now they realize after 20-25 years कि उनको ब्रिज कंस्ट्रक्शन जो उनका मेन निच है, जो I am waiting for you that you will get me. वो कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट जो करते आए थे वो ब्रिजेस की, now they decide कि उनको थोड़ा सा इनोवेट करना है और वो ब्रिज कंस्ट्रक्शन के अलावा अब दे हैव डिसाइडेड कि वो हाई राइज बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के अंदर भी इन्वॉल्व होते हैं और ऐसे प्रोजेक्ट्स भी करें जो हाई राइज बिल्डिंग्स बनती. ये ऑल्दो सिमिलर इन द नेचर के दोनों कॉन्ट्रैक्टिंग और सिविल वर्क्स इन्वॉल्व हैं, बट इट इज एन इनोवेटिव अप्रोच क्योंकि your organization जो है they are not familiar with the conditions in housing. They are familiar with the conditions with what you call it infrastructure bridges. तो ये innovation जो है वो basically high risk भी हो सकती है. तो हम किस तरीके से बैलेंस करें इस रिस्क को when we are doing innovation, that is the point. So creating a balanced portfolio mix that includes higher risk, high reward and projects, as well as low risk and incremental improvement projects. तो वो portfolio management में it is very important कि आप एक balance create कर सकें. Dynamic business environment, conducting continuous environment scanning and market analysis, being agile in portfolio adjustments to respond regulatory changes, market trends, and technological advancements. Encouraging a flexible project management approach such as agile or hybrid methodologies to rapidly adopt to changes. Business environment is dynamic. Technological advancements are on daily basis. हमें as a part of the portfolio level, we have to respond to regulatory changes, market trends, and technological changes.
It is not like this that I'm doing a certain job for last 50 years. So I keeps on doing that. No, it is not like this. You can change that at any point of time. You can adopt the changes at any point of time. डायनामिक बिजनेस एनवायरनमेंट के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जिसके अंदर रैपिड टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हैं, मार्केट वर्टिलिटी है और रेगुलेटरी शिफ्ट्स हैं, और साथ ही डायनामिक एनवायरनमेंट अडॉप्टिंग किस तरीके से डायनामिक एनवायरनमेंट अडॉप्ट कर सकते हैं. तो वी रेफर टू द एजाइल पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, continuous monitoring and adoption, and scenario planning for adopting SPPM dynamic environments. पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में कुछ टूल्स भी यूज किए जाते हैं जिसके अंदर माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट, प्राइमेवेरा और जिरा पोर्टफोलियो मैनेजमेंट टूल्स हैं. ये एप्लीकेशंस हैं बहुत वर्ल्ड वाइड, very well known, very well, highly respected applications that are available, and industry is working on these applications. Techniques में stage gate balancing है, balance scorecard process है, earned value management. These are the techniques that we use for SPPM. अगर आप स्ट्रेटेजिक पोर्टफोलियो मैनेजमेंट अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रन करना चाहते हैं, आप अडॉप्ट करना चाहते हैं, इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, आई हैव फ्यू स्टेप्स हियर that how you can establish a governance steps for SPPM. So पहला स्टेप जो है, step 1 is establishing a governance framework. आपने पहले एक proper governance framework बनाना है, then defining strategic objectives, framework objectives define करने, developing a project selection criteria, the project selection criteria उसको develop करना, और फिर setting up the PM, project manager. So these are very important steps for implementation of projects. Portfolio management and then training and development is important. Successful होने के लिए continuous improvement or key performance indicators are very integral part. You need to have a continuous improvement in the portfolio, and you need to set up the key performance indicators in your portfolio. Future trends of the portfolio management is emerging trends and technologies, AI or machine learning. पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के अंदर बहुत ज़्यादा इन है, ब्लॉकचेन और ट्रांसपेरेंसी एंड सिक्योरिटी. दीज आर द इमर्जिंग ट्रेंड्स इन पोर्टफोलियो मैनेजमेंट. पोर्टफोलियो मैनेजर का रोल बहुत इवॉल्व हो रहा है वर्ल्ड वाइड, इसको बहुत ही फोकस देखा जा रहा है. Conclusion: balancing innovation and risk within the strategic portfolio management is vital for sustaining business growth, comparativeness. By implementing robust risk management practices, fostering a culture of innovation, and maintaining strategic alignment, organization can navigate the complexities, dynamic business environment, and achieve their goals, long-term goals. With this, I complete my today's presentation. I'm available for the question answer. Even I tried to make interactive, but unfortunately, none of you, except one or two persons who contributed during the session. ये सेशन बड़ा प्रोडक्टिव हो जाता है जब हम इसको इंटरेक्टिव कर देते हैं, और जो ट्रेनर होता है या जो सेशन दे रहा होता है वो मैक्सिमम नॉलेज शेयर कर पाता है.
अगर session interactive. Anyways, I'm open for the questions. If you like to have any question, please speak out. I'm available. Any of the slide you want me to elaborate again, I can elaborate. जी, किसी को कोई क्वेश्चन करना है मुझसे, कोई सवाल, कोई टॉपिक डिस्कस करना चाहें? काइंडली किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो काइंडली सर से क्वेश्चन कर ले। आप टाइप भी कर सकते हैं, अगर आप जो है वो बोलना नहीं चाह रहे तो काइंडली टाइप कर दें क्वेश्चन, सर उसको आंसर कर देंगे। जी, अस्सलाम वालेकुम सर। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, आवाज आ रही है? वालेकुम सलाम जी, आवाज आ रही है? सर मैं कुछ टूल्स एंड टेक्निक्स जो आपने बताए हैं STPM के, आई वांट टू जस्ट आस्क कि जो ये टूल्स हैं लाइक माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट, आई एम फेमिलियर, बट जो ये अदर टू टूल्स हैं, अगर आप ओपन कर लें साइट तो मैं आपसे ज़्यादा बेहतर तरीके से पूछूं। आप इधर की बात कर रहे हैं, टूल्स की? जी सर, जी सर, जी, ये जो टूल्स हैं माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट, आई एम फेमिलियर, जो अदर टूल्स हैं, आ, ये इनको अगर आप एलेबोरेट कर दें फॉर द पर्पस लाइक आई एम टीचिंग, तो माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट आई एम ऑलरेडी टीचिंग इन द क्लास, बट ये जो अदर टू टूल्स हैं ये किस तरह बेनिफिट दे सकते हैं स्टूडेंट्स को, या ये इनके क्या एडवांटेजेस हैं? ऑब्वियसली हर टूल का एक डिफरेंट प्लस पॉइंट होता है, कुछ ड्रॉबैक। इनसे हम बेसिकली किस तरह पोर्टफोलियो मैनेजमेंट परफॉर्म कर सकते हैं, और इनमें से टूल कौन सा बेहतर है, इसको जरा थोड़ा सा एलेबोरेट अच्छा कर देखिए, दें आप। बात यह है कि टूल्स की लिमिटेशंस होती हैं। जब हम जिरा की बात करते हैं तो हम एजाइल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर जिरा यूज करते हैं, ये एजाइल पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के अंदर वी यूज जिरा। आई डोंट नो वेदर एनी ऑफ यू हैव used Jira or not. आई एम नॉट। अच्छा, बात so Jira portfolio management is one of the very important tool that we use in Jira portfolio management. Online tool है ये, और हम Jira जो है सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के अंदर बहुत रेगुलर यूज होता है। IT इंडस्ट्री के अंदर Jira का यूटिलाइजेशन बहुत ज्यादा है। अच्छा, प्राइमवेरा जो है ये इंटरप्राइज लेवल पे जब हम प्रोजेक्ट्स पोर्टफोलियो को एग्जीक्यूट करते हैं तो इट इज अ वैल्यू एडिंग टूल एट द एंटरप्राइज लेवल। एंटरप्राइज की बात करते हैं हम, तो हम मतलब किसी भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपको पता है मुख्तलिफ लेयर्स होती हैं और मुख्तलिफ लेयर्स पे प्रोजेक्ट्स हो रहे होते हैं। तो एंटरप्राइज प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए या पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के लिए प्राइमवेरा, इसको हम Oracle P6 भी कहते हैं, इट्स वन ऑफ द की टूल दैट वी आर यूजिंग। माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट आप ऑलरेडी यूज कर रहे हैं। माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट जो है वो भी आपको सपोर्ट करता है, मगर माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट के अंदर ज्यादा जो सपोर्ट है वो प्रोजेक्ट लेवल के ऊपर होती है। Primavera is highly recommended tool for portfolio project management, and then for Jira for the IT industry. Is it clear? यस सर, थैंक यू। देखिए, ये डिपेंड करता है टूल्स, आप कितनी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है। मैं जब प्रोजेक्ट्स पे काम करता हूँ, जब मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बनता हूँ, मुझे कोई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन इनवाइट करती है कि हम अपना पोर्टफोलियो डिज़ाइन करना चाह रहे हैं या हम अपना प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऑफिस डिज़ाइन करना चाह रहे हैं और हम सेटअप करना चाह रहे हैं हमारे हम चाहते हैं कि हमारा हम PMO डेवलप करें किसी ऑर्गेनाइजेशन का, तो मैं फिर उस ऑर्गेनाइजेशन को जो सबसे पहली चीज आमतौर पर सजेस्ट करता हूँ वो मैं कहता हूँ अपडेट विद द टेक्नोलॉजी। आप मैक्सिमाइज करिए अपने आप को, टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट जो है वो बहुत जरूरी है।
Adoption of the technology is very important. कि आप लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को अपडेट करिए, अपने अपने प्रोजेक्ट्स का हिस्सा बनाइए और उसकी यूटिलाइजेशन करिए। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा जी, हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं चैट बॉक्स के अंदर, मैं उनको पढ़ लेता हूँ। आर द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, ये फयाज साहब पूछ रहे हैं, आर द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सर्टिफिकेशन एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्टिफिकेशन आर टू स्ट्रीम्स? Absolutely, these are separate streams. Project management is as a tactical level. जैसे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सर्टिफिकेशन के अंदर हमारे पास PMP है, Prince2 है, these are the project management. हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से अबव हम पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की बात करते हैं। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट इज सेपरेट सर्टिफिकेशन और ये बिल्कुल ही सेपरेट स्ट्रीम है, बिल्कुल 100%, और इट इज मोर एडवांस, मोर स्ट्रेटेजिक। फिर उसके बाद डॉक्टर जफर, what's the name of the institution and when will the next training be? मेरी ट्रेनिंग्स ऑनलाइन और ऑन साइट रेगुलर चलती हैं। मैं रिप्रेजेंट करता हूँ डायमेंशंस ग्लोबल को, और you can get my contacts from NPO. They can provide my contacts to you if you want me to conduct any training or you want to be a part of my trainings. You're most welcome. So anyone else, any other question? जी, जी। किसी पार्टिसिपेंट का क्वेश्चन हो काइंडली। क्या क्या रीजन है कि इंटरैक्टिव नहीं बना सके पार्टिसिपेंट्स, अपना डिस्कशंस नहीं कर सके? मेरे लिए ये बड़ा, हालांकि सर टॉपिक तो बड़ा इंटरेक्टिव था, अगर पार्टिसिपेंट्स थोड़ा इसमें इंटरेस्ट शो करते। डॉक्टर मोहम्मद जफर कह रहे हैं क्वेश्चन मार्क। डॉक्टर साहब कुछ इलेबोरेट करेंगे, क्या पूछना चाह रहे हैं आप? हेलो जी सर, डॉक्टर जफर बोल रहा हूँ। जी डॉक्टर साहब बोलिए। अनलकीली मैं पहली ट्रेनिंग मिस कर बैठा। ये पहली ट्रेनिंग मैंने की है। आपकी ट्रेनिंग बहुत अच्छी है। आइंदा आप कब कराएंगे? मैं डायरेक्टर शुगर केन पंजाब बोल रहा हूँ। सर आप ट्रेनिंग तो हम रेगुलर NPO से भी कराते हैं, वैसे भी ट्रेनिंग कराते हैं, तो यू आर मोस्ट वेलकम। यस अगर सर। आप स्पेशलाइज कोई ट्रेनिंग अरेंज करना चाहते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए तो वो भी मुमकिन है। आप इन NPO से कांटेक्ट कर लीजिए। मेरी नेक्स्ट ट्रेनिंग ये लोग अनाउंस करेंगे, तो आप कैसे सर, कैसे कांटेक्ट करें? ये हमारे पास सर कांटेक्ट किसके करें? कैसे? डॉक्टर साहब आपका कांटेक्ट हमारे पास है, इंशाल्लाह सर के जो नेक्स्ट ट्रेनिंग्स होंगे ना वो हम आपको शेयर कर देंगे डिटेल इंशाल्लाह। तो अगर सर की आप कोई ट्रेनिंग अगर हम चाह रहे हैं, फैसलाबाद में करवाना चाहें तो फिर? सर जी अगर आप जी। फैसलाबाद में करवाना चाहें आप अपनी रिक्वायरमेंट बता दें। तो अगर आप फिजिकल लेना चाह रहे हैं फिर हम सर को इनवाइट कर लेंगे, अगर आप जूम के थ्रू चाह रहे हैं तो वो भी हम अरेंज कर लेंगे, कोई इशू नहीं। आप अपना टॉपिक वगैरह जो डिटेल है वो मुझे सेंड कर चलो दें। काइंडली अपना नंबर तो बता दें। आप फोकल पर्सन हैं सर, जी जी, नंबर तो बता NPO दें अपना। पाकिस्तान से सर बात कर रहा हूँ मैं, फैसलाबाद ऑफिस से। आपका जो जो एक्सक्यूज मी, अपना पर्सन है, जो डॉक्टर है ना दूसरे, क्या नाम है आपके, उन्होंने आपके रजिस्ट्रेशन करवाई है, उनके पास मेरा नंबर है, मैं आपको भी शेयर कर देता हूँ। तो आप काइंडली जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है मैं भिजवा दीजिएगा, ठीक है सर। थैंक यू डॉक्टर, ठीक है सर, ठीक है सर, थैंक यू थैंक यू। वेरी मच, आई अप्रिशिएट, थैंक यू वेरी मच, जी थैंक यू वेरी किसी मच फॉर दिस। किसी का कोई क्वेश्चन हो, नहीं तो फिर सर से इजाज़त लें। आप लोगों का भी शुक्रिया, आप लोगों ने सेशन अटेंड किया। थैंक यू वेरी मच। ओके,
Okay, sir. Thank you, sir. Thank you for your time. होते हैं और thank you very much. Thanks for sparing time. Thank you. Thank you. मैं ये आपसे शेयर कर लेता हूँ. जी सर, काइंडली कोर्स मुझे भेज दें. आप शेयर कर लीजिए पार्टिसिपेंट्स के साथ अगर चाहें आप. जी जी सर. सही है. तो ये मैं आपको कैसे शेयर करूँ? अभी शेयर इस पे शेयर करूँ? कहाँ हाँ, से व्हाट्सएप शेयर कर दें, ईमेल कर दें सर. व्हाट्सएप कर दें आप मुझे. आसिफ साहब के व्हाट्सएप पे कर देता हूँ. जी जी, जिस पे आपसे कोऑर्डिनेशन हो रही है उस पे कर दें. आसिफ साहब को भेज दें. हाँ जी. चलें, मैं भी भेज. Thank you, sir. थैंक यू.